गाइस वेलकम ऑन मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आपके अपने चैनल मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स पर आपका स्वागत है। आज सैंपल पेपर नंबर 3 लेके आए हैं। 2 पेपर हमने पहले डाल दिए वीडियो, जो कि आपको एडुला मित्रा पर भी मिलेंगी, एडुटेक्नो मित्रा पर भी मिलेंगी। आप किसी भी चैनल पर इनको देख सकते हो। आज हम इसको सैंपल पेपर 3 को करेंगे। हम टोटल 5 पेपर करेंगे और उसके बाद एक 6 जो है फाइनल पेपर डालेंगे। आप सभी वीडियोस देख लेना, मैक्सिमम जो है पेपर इनमें से आएगा। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला अपना एक्ट है सिविल प्रोसीजर कोड 1908। क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो ये क्वेश्चन पेपर डुअल लैंग्वेज में है, पहले क्वेश्चन आ रहा है हिंदी में, उसके बाद उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। मैं इस पूरे पेपर को इंग्लिश में अटेम्प्ट करूंगा। हिंदी वाले स्टूडेंट जो है, जो भी अपने वकील भाई हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, वो क्वेश्चन को पहले हिंदी में पढ़ सकते हैं और वही ऑप्शन नीचे इंग्लिश वर्जन में देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1। कोर्ट कैन डायरेक्ट द पार्टीज टू ऑप्ट फॉर एनी वन मोड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन सिविल प्रोसीजर कोड। इसकी राइट ऑप्शन है ए, अंडर O10R-IA। Question number 2. How much salary of a person can be attached in execution of a degree for maintenance? इसकी राइट ऑप्शन है डी, 1/3। क्वेश्चन नंबर 3. In which of the following section of civil procedure code provision of open court to which the public generally may have access has been provided in? ऑप्शन है बी, सेक्शन 153 बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4. Who can file a suit under section 91 of civil procedure code for public nuisance? इसकी राइट ऑप्शन है ए, एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following provision of code of civil procedure is related to set off? इसकी राइट ऑप्शन है बी, ऑर्डर 8 रूल 6। क्वेश्चन नंबर 6. Where plaint has not been filed in duplicate then plaint shall be, ये आपने ब्लैंक स्पेस भरना है। इसकी राइट ऑप्शन है बी, रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर 2 सेट में नहीं दिया। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कोर्ट में नॉट इश्यू ए कमीशन? राइट ऑप्शन है ए, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। और क्वेश्चन नंबर 8. ए कैविएट लॉज्ड अंडर सेक्शन 148 ए का सब सेक्शन 1 shall not remain in force after the expiry of, अगर कोई कैविएट लॉस्ट की है इस सेक्शन के तहत, इस सेक्शन में इसका आंसर हो सकता है। इसकी राइट ऑप्शन है डी, 90 डेज। क्वेश्चन नंबर 9. The doctrine of res judicata as contained in section 11 is based on the maxim. इसकी राइट ऑप्शन है ए, नेमो डेबिट बिस vexari pro una et idem causa. Question number 10. Which provision of the code deals with joinder of causes of action? Right option है A, order 2 rule 3. Question number 11. Under which provision of civil procedure code 1908 enlargement of time is permissible? Right option है B, section 148. Question number 12. Which of the following statement is incorrect about decree passed in accordance with the compromise? Right option है A, fresh suit on same cause of action will be maintainable. Question number 13. On which of the following grounds a decree passed against minor may be set aside? Right option है B, by the reason of adverse interest of the next friend or guardian for the suit prejudice has been caused to the interest of the minor. Question number 14. Cross objection may be filed. Option B, by any of the respondents. Question number 15. Which section of civil procedure code 908 provides compensatory cost in respect of false or vexatious claims or defenses? Right option है B, section 35A. Question number 16. In means profits it also contains. Right option है D, both of the B and C. B में दिया profits including interest which the person in wrongful possession of such property actually received, यानी जो wrongful possession से जो भी कमाया है वो भी देना पड़ेगा। और C, those profits with interest might be received therefrom with the ordinary diligences by person in wrongful possession. Question number 17. Meaning and object of res judicata is? Right option है D, all of the above, यानी to avoid the multiplicity of suits, double jeopardy
to form the determination of the court final and conclusive. ये देखो हमने जो सैंपल पेपर 1 और 2 किए थे उसमें भी all of the above ऑप्शन जो है ना मैक्सिमम राइट थी. क्वेश्चन नंबर 18, the court may at any time and on such term as to cost or otherwise as it may think fit amend any defect or error in any proceeding in a suit under the following provisions. Right option है D. Order 41, Rule 27, CPC. Question number 19. Appellate court may require appellant to furnish security on for cost. इसकी right option है B. When order has been passed under Order 41, Rule 10, CPC. Question number 20. Where an appeal is dismissed under Order 41, Rule 11, Sub-Rule 2 or Rule 17, appellant court can readmit under the following provision. Right option है B. Order 41, Rule 19, CPC. अब हमारा आ गया लिमिटेशन एक्ट 1963 और इसके जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है 3, 5 to 14, 27, 29, आर्टिकल 64, 65 एंड 137. ये सेक्शन जो है इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना. इसमें लिमिटेशन एक्ट 1963 में. अभी क्वेश्चन नंबर 21. अंडर आर्टिकल 64 सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी फाइल्ड. राइट ऑप्शन है ए. ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस पोजेशन. क्वेश्चन नंबर 22. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट ब्रॉट फॉर नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रेस्क्राइब्ड. इसकी राइट ऑप्शन है डी. सूट रिलेटिंग टू ट्रस्ट. क्वेश्चन नंबर 23. एनी सूट फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड elsewhere in the schedule of the act, the limitation would be. Right option B, 3 years. Section 5 of the Limitation Act applies to. Right option B, appeal and application. Question number 25. If any child in womb who has attained majority after birth wants to file a suit for possession of property challenging sale of property by guardian, then within which period he may being sued after attaining majority. Right option है C, 3 years. अब हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 आ गया. इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन है चैप्टर 1 सेक्शन 5, 6, 7 एंड 8, चैप्टर 6 सेक्शन 34 एंड 35, चैप्टर 8 सेक्शन 38 एंड 41 इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन है. क्वेश्चन नंबर 26. एन ऑर्डर और डिक्री अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट इज. राइट ऑप्शन सी, नाइदर अपीलेबल नोर रिव्यूएबल. रिव्यू भी नहीं डलेगी उसकी. क्वेश्चन नंबर 27. टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ व्हिच इंजेक्शन मे बी ग्रांटेड. राइट ऑप्शन है बी, परपेचुअल इंजेक्शन. व्हिच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन ऑफ कोर्ट कैन नॉट इश्यू. राइट ऑप्शन ए, मल्टीबेरी इंजेक्शन. क्वेश्चन नंबर 29. रेमेडीज मे बी ग्रांटेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 रिगार्डिंग एक्वायरिंग ऑफ लीगल पोजेशन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ. सेक्शन में इसका आंसर हो सकता है, एक्ट से देख सकते हो. राइट ऑप्शन है सी, बोथ द ए एंड बी. प्लेंटी प्रूव्स हिज टाइटल, प्लेंटी प्रूव्स हिज लीगल राइट्स. क्वेश्चन नंबर 30. परपेचुअल इंजेक्शन कैन बी ग्रांटेड की राइट ऑप्शन है डी. सेक्शन 38 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 140, 163 एंड 166 ये इंपॉर्टेंट सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 31. इन विच सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशंस ऑन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला इज प्रोवाइडेड. राइट ऑप्शन इज सी, सेक्शन 163A. क्वेश्चन नंबर 32. For the purpose of section 163A of Motor Vehicle Act, what is the meaning and extent of permanent disablement? Right option is C, as defined in Workmen's Compensation Act 1923. ये जो है ना दो तरह के एक्ट हैं, एक तो मोटर व्हीकल एक्ट और एक है वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट. इन दोनों एक्ट के तहत किसी में भी आप क्लेम फाइल कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. The question of contributory negligence of the claimant of deceased in a motor accident can be examined. Right option A, in a claim under section 166. Question number 34. No application can be filed for compensation by the claimant under section 166 Motor Vehicle Act 1988. Right option C. If death of an unmarried man, then close friend who resides jointly with the deceased. Question number 35. Fact of wrongful act or negligence is not required to be proved in a claim under section. ये blank space भरना है. The Motor Vehicle Act 1988. Right option C, under section 163A. अब हमारा आ गया है Code of Criminal Procedure.
CRPC. क्वेश्चन नंबर 36 इमें ब्लैंक स्पेस भरना है आपने. ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 डील्स विद द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट टू अरेस्ट. सेक्शन 44. राइट ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 37. Who can withdraw a case from the prosecution under section 321 CRPC? Right option है B. Public prosecutor in charge of a case with permission of court. Question number 38. The court can record demeanor of a witness under which section of the CRPC 1973? Right option A है section 280. Question number 39. In one trial, A is awarded with sentence which is not appealable, whereas sentence against B is appealable. Whether A can file an appeal against his sentence? Right option is C. Yes. Question number 40. In which section of the Criminal Procedure Code 1973 the period of a limitation in relation to an offence is described? Right option is C. Section 469. Question number 41. In which section of the Criminal Procedure Code 1973 the irregularities which do not vitiate proceedings are mentioned? Right option A. Section 460. Question number 42. If it appears to the magistrate that the offence complained of is triable exclusively by the Court of Session, he under section 202 CRPC postponing the issue of process against the accused. Right option is C. Shall call upon the complainant to produce all his witnesses and examine them on oath. Question number 43. Which section of the Indian Penal Code defines murder? यानी किस सेक्शन में मर्डर की डेफिनेशन दी हुई है? इसकी राइट ऑप्शन है बी. सेक्शन 300 में. Question number 44. Where it appears to the court that the accused do not have sufficient means to engage a pleader, the court shall assign a pleader for his defense at the expense of the state. This provision is in which section? इसका सेक्शन राइट ऑप्शन है डी. सेक्शन 304. Question number 45. Sentence of death awarded by Court of Session. The proceedings shall be submitted to confirmation before. राइट ऑप्शन सी. द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट से उसको सेंटेंस को कंफर्म कराना पड़ेगा तभी उसको सेंटेंस दी जाएगी. अंडर सेक्शन 357 ए सब सेक्शन 2 सीआरपीसी which of the authority is authorized to decide quantum of compensation? State or district legal service authority. Question number 47. A report made by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offence. Right option is C. Shall be deemed to be a complaint. Question number 48. Who cannot issue a search warrant for persons wrongfully confined? इसकी राइट ऑप्शन है डी. जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास. क्वेश्चन नंबर 50. व्हेन ए कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस इफ. इसकी राइट ऑप्शन है all of the above. यानी a court has made a complaint, the magistrate makes over the case for inquiry or trial to another magistrate under section 192 of CRPC 1973. A public servant acting in the discharge of his official duties made the complaint. यानी इसकी right option all of the above. Question number 50. Which is not a precondition to acquit the accused person under section 232 of the Code of Criminal Procedure? Right option है after taking defense evidence. Question number 51. Breach of any condition, the bond executed by such person as well as the bond executed by his sureties in that case shall stand cancelled with effect from section blank space बताना है. 446A RPC. Question number 52. Court can exercise power which is vested under section 216 CRPC. Right option है A. Add to and alter the charges both. Question number 53. Under section blank space of Criminal Procedure Code, the victim may file an appeal on limited oblique certain grounds. Right option is C. Under section 372. In which trial hearing of the accused on sentence is not necessary. Right option B. Summon trial. Question number 55. The tender of
pardon to accomplice is provided? Right option B, under section 306 CRPC. अब हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आ गया है. अब इसके क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन नंबर 56, विच इज नॉट ए प्री कंडीशन टू रेज ए ऑब्लिगेटरी presumption under section 113B of the Evidence Act? Right option है A, the accused is being tried for offence under section 4 of the Dowry Provision Act 1961. Question number 57, which one document from the following is not a public document? Right option है D, will. जो will बनाई जाती है, वसीयत होती कहते हैं इसको, वो जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट में नहीं आता है. क्वेश्चन नंबर 58, इन ए प्रोसिक्यूशन फॉर ए रेप क्वेश्चन इन क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द prosecutrix as to her general immoral character are? Right option B, not permissible. Question number 59, former statement of a witness may be proved to corroborate later testimony as to the same fact as provided under which section of the Indian Evidence Act? Right option A, section 157. Question number 60, leading question can be asked without permission of the court during? Right option B, cross examination. Test identification period is? Right option B, corroborative evidence. Which section of the CRPC defines complaint? Right option B, section 2D. Fact includes? Right option A D, all of the above. Anything capable of being perceived by the sense, any mental condition of which any person is conscious, ए मैन हर्ड और सा समथिंग, ये सभी फैक्ट के अंदर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 64, ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर एडल्ट्री विद सी एज वाइफ. ही डिनाइज दैट सी इज एज वाइफ बट द कोर्ट कन्विक्ट्स बी ऑफ adultery. Afterwards, C is prosecuted for bigamy in marrying B during A's lifetime. C says that C never was A's wife. इसकी right option है D. The judgment against B is irrelevant as against C. Question number 65. To prove a document required by law to be attested, if no attesting witness can be found, then? Right option is C. Both the above are necessary. It must be proved that the attestation of one attesting witness at least is in his handwriting. और बी है, इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट इज इन द हैंडराइटिंग ऑफ दैट पर्सन. यानी राइट ऑप्शन सी हुई. बोथ ऑफ द अबव आर नेसेसरी. क्वेश्चन नंबर 66, ए विशेस टू प्रूव बाय सेकेंडरी एविडेंस द कंटेंट्स ऑफ ए लॉस्ट डॉक्यूमेंट. राइट ऑप्शन सी, A must prove that the document has been lost. Question number 67, to prove a registered will deed always necessary to call. Right option A, at least one attested witness. Question number 68, confession of an accused is admissible evidence against co-accused. Right option C, if they are tried jointly for the same offence. Question number 69, the question is whether A poisoned B the state of B's health before the symptoms subscribed to poisoned and habits of B known to A, which afforded an opportunity for the administration of poison. Right option B are relevant fact. Under section 27 of the Evidence Act, the discovery of fact means? Right option B, the place from where the object is produced. Question number 71, which one of the following is an essential ingredient of a sedition? Right option है D. Words spoken must be capable of exciting disaffection towards the government. Question number 72. Z going on a journey in trust is golden plate to A. Till Z shall return, A carries the plate to the market and sells it. What crime was committed by A? Right option है D. Criminal breach of trust. Question number 73. For how long in a hole a convicted person for a crime be kept in solitary confinement? Right option B, 3 months. Question number 74. X on receiving grave and sudden provocation from Z intentionally causes the death of Y, who is brother of Z. X has committed. Right option A, murder. Question number 75. A demand or request for sexual favor from a woman is punishable offence under Indian Penal Code 1860 under? Right option A, section 354A. Question number 76. If offence is punishable with imprisonment and fine both, then in default of payment of fine, maximum term may be?
blank space the prescribed maximum term. 1/4 of the prescribed maximum term. Question number 77. A by putting B in fear of grievous hurt dishonestly induces B to sign on a blank paper and deliver it to A. A has committed the offense of right option A, cheating. Question number 78. Which one of the following acts is not a mode of abetment? Which act is not a mode of abatement under the IPC? Right option D, an attempt. Question number 79. Which hurt is not a grievous hurt? Right option D, suffering of 15 days from severe bodily pain. Question number 80. A drove the car recklessly or negligently on the public way and damaged the property of B. Thereby he committed offense under what sections? Right option A, 279 IPC. Question number 81. The offense of attempt to commit culpable homicide is punishable under section 308 IPC. A person said to do thing dishonestly. Right option A. Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person. Question number 83. When offense punishable with fine, only the imprisonment for non-payment of fine of rupees 200 may up to. Right option A, 6 months. Question number 84. There is no right of private defense against an act if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office. Right option C, both of the above, which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt. B, though that act may not be strictly justifiable by law. इसलिए right option is C, both of the above. Question number 85. A finds a rupee on the high road, not knowing to whom the rupee belongs. A picks up the rupee. Right option is D. A has not committed the offense defined in section 403 IPC. Question number 86. If at the time of committing robbery the offender uses a knife but no any injury causes to the victim, offense punishable under. Right option is C. Under section 392 read with 397 Indian Penal Code. Question number 87. Abatement in any offense is B, always an offense. Question number 88. A by placing some diamonds articles which he knows are not diamonds intentionally deceives Z and thereby dishonestly induces Z to lend money. A has committed. Right option is D, offense committed under section 415 IPC. Question number 89. Voluntarily causing her to extort property or constrain to do an illegal act as punishable act. Right option is C, section 327 IPC. Question number 90. A places man with firearms at the outlets of a building and tells B that they will fire at Z if Z attempts to leave the building. Z is confined for 16 days. Offense will be punishable under section Khalistan Barna. Right option is D, section 344 IPC. Negotiable Instrument Act 1881. Question number 91. Which defense may not be allowed in the proceeding under section 138 of the Negotiable Instrument Act 1881? Right option is C. He had no reason to believe when check was issued that the same may be dishonored. Question number 92. Negotiable Instrument Act 1881. Checks issued under same transactions dishonored one complaint in respect of all checks. Right option B, non-maintainable. Question number 93. In which court the complainant has to file an appeal against the order of the acquittal under section 138 of the Act? Right option A B, High Court. A court cannot take cognizance of offence under Negotiable Instruments Act 1881 on. Right option C, oral complaint of the payee or as the case may be, the holder in due course of check. Question number 95. In order to rebut the presumptions under section 139 of Negotiable Instrument Act, accused, right option is D, may rebut the presumption on the principle of preponderance of probability. आज के सेशन का ही लास्ट एक्ट है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003. Negligently breaking or damaging works is punishable under section of Electricity Act 2003. Right option C, section 139. Question number 97. Abatement of offences of Electricity Act 2003 is punishable under which section? Right option A, section 150 Electricity Act. Under section 96 of the Electricity Act for conducting a raid. Right option A D,
no notice is necessary. Question number 99. In which type of dispute civil court not to have hearing jurisdiction? Right option है A. आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज 100 क्वेश्चन ये पूरे हो गए और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालना, हम डाउट का रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 100. In case of any conviction by a special court under section 154(3) of the Electricity Act 2003 in summary trial may pass a maximum sentence of imprisonment of a term. Right option is C, not exceeding 5 years. Guys, वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, ग्रुपों में शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा एडवोकेट्स भाई इस वीडियो का फायदा उठा सकें और AIBE का एग्जाम अच्छे से दे सकें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे 3 चैनल एडुटेक्नो मित्रा, एडुला मित्रा, MJ मित्रा, तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।